द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं फैसल शेरजान। इनको इनके दोस्त FSJ कहते हैं, तो हम इनको FSJ के नाम से ही मुखातिब करेंगे। इन्होंने बड़े डाइवर्स काम किए हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ आर्मी से किया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग में चले गए, फिर मीडिया, ट्रेनिंग, टेलीफनी, और हाल ही में PTI के साथ नैरेटिव बिल्डिंग पे काम करते रहे और कोर कमेटी के मेंबर हैं। और मैं वाजे करता जाऊं कि कोर कमेटी के इस वक्त 25 रुकन हैं, 25 मेंबर्स ऑफ द कोर कमेटी। वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, इट्स गुड टू बी हियर। आप बड़ा अहम काम करते रहे हैं PTI के साथ नैरेटिव बिल्डिंग पे। तो हमारा जो नैरेटिव है, पार्टी का नैरेटिव से हटके जो स्टेट का नैरेटिव है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो काफ़ी वीक है। मैंने मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के इंटरव्यूज़ किए और उनका ये गिला होता है कि जी हमारे लोग इंडिया के चैनल्स पे जाते हैं, वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते। तो क्या ये एक वीकनेस का इजहार नहीं है कि हमारा बयानिया इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा नैरेटिव वीक है कि हमारे अपने ही लोग इंडियन चैनल पे जाके उसको डिफेंड नहीं कर पाते और हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स को लगता है कि वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए शकील साहब, हमारा नैरेटिव हमेशा से वीक रहा है, स्पेशली हमारा स्टेट नैरेटिव, क्योंकि हमने आज तक डिटर्मिन ही नहीं किया कि हम हैं कौन और हमारी डेस्टिनी क्या है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है। पर्टिकुलरली जब ये आप बात कर रहे हैं रिटायर्ड एम्बेसडर्स की, इनका काम था टू बिल्ड द नैरेटिव इंटरनेशनली विद इंटरनेशनल ऑडियंस, टू स्टार्ट टू एंगेज people who have influence, who are opinion makers, और उनको engage करना चाहिए। ये नहीं करते। I've experienced it myself. I was running a TV channel in the UK in 1992, 94. I was there till about 94 and then I came back. ठीक है जी, उसमें पाकिस्तान के जो हाई कॉन्सुलेट हाई कमीशन था वहाँ पर, they never had time. They did not give us a minute. और जो इंडियन हाई कमीशन है वो हर रोज जो है, हमारी फैक्स मशीन जो है सुबह से भरना शुरू होती थी, शाम तक चलती रहती। दे वर ऑलवेज सेंडिंग समथिंग। फिर वो करते ये थे कि वो इंडिया से आर्टिस्ट बुलाते थे, उनका इंडिया हाउस था, उसमें जो है वो स्वायरेज करते थे, वो वहाँ रिसाइटल्स होते, कभी सितार रिसाइटल हो रहा है, कभी हरिप्रसाद चौरसिया आए हुए और वो फ्लू में आपको सुना रहे हैं। और वहाँ पर वो इन्वाइट करते थे जो मेजर एडिटर्स थे ऑफ न्यूज पेपर्स, स्पेशली एट दैट टाइम, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फैला नहीं था उसमें। और उन इवेंट्स पे वो जो अपने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाते थे, नेटवर्किंग होती थी। इवेंचुअली समर्स में या जब भी टाइम मिलता था, दो स्टूडेंट्स एंडेड अप वर्किंग एज इंटर्न्स इन दोज न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एंड अ गुड इंटर्न नेवर लीव्स। ये भी एक फैक्ट है। दैट इज हाउ देयर इन्फ्लुएंस वाज देयर इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। हम जो है वो अगर चले जाएं आप न्यूयॉर्क, तो क्वींस में हर रेस्टोरेंट में जो है एक अखबार छप रहा होता है पाकिस्तानी, ठीक है ना, इधर उधर से खबरें उठा के डाल के वो छाप रहे होते हैं। एक दो रेडियो स्टेशन जो है, लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे वो आके जो है ना, वो भी नॉर्मली जो है कोई रेस्टोरेंट का ओनर ही होता है जो आके बैठ जाता है। जी शकील साहब, आर यू विद मी? जी जी जी, श्योर श्योर श्योर। अच्छा, तो उसमें मैंने ये सारा कुछ देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। ट्राइड वेरी हार्ड 90s में भी और राइट अप टू 2000, बिकॉज आई वाज आल्सो रनिंग NTM इन पाकिस्तान। उसमें भी बड़ी कोशिश की, बट देयर वाज नो सपोर्ट। देन यू हैव PID, द प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। उसका एक इंटरनल विंग है, एक एक्सटर्नल विंग है। इंटरनल विंग जो है, ठीक है ना, तो वो लेस सेड अबाउट दैट द बेटर, राइट? दैट इज सपोज्ड टू बी right helping the narrative of the state locally, but all they do is make money. The external wing is no better. ठीक है ना, मैंने recently भी last year भी मैंने देखा, in fact I went and held a workshop जो उनका साइबर डिवीजन था एक्सटर्नल विंग का, उसके साथ मैंने जाके उनके साथ प्रॉपर 3-3.5 घंटे का मैंने वर्कशॉप किया ऑन डिजाइन थिंकिंग, ऑन हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम एंड हाउ यू देन डिफाइन अ सॉल्यूशन फॉर इट।
वैसे ही जो है ना इंटरेस्ट ही नहीं था, ना सेक्रेटरी को, ना उसके नीचे, ना किसी और को, ठीक है ना, खाना पूरियां करते हैं, दैट्स ऑल दे डू। तो नैरेटिव कैसे बिल्ड होगा? एट बेस्ट किसी एम्बेसडर ने अगर किया, बल या लोधी ने कुछ किया, when she was the British High Commissioner in London, she tried. उसने एक इवेंट जो है वो उस पे ट्रफालगर स्क्वायर पे किया। आई रिमेम्बर फीफी हारून प्रोड्यूस दैट इवेंट, you know, पाकिस्तान से आर्टिस्ट बुलाए, सारा कुछ किया। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कैन नॉट बी डन इन फिट्स एंड स्टार्ट्स कि आज आप कुछ कहें कल आप कुछ और कहें। तो ये है असल वजह, जो हमारा स्टेट नैरेटिव है या नेशनल नैरेटिव है, उसको कभी भी तकवीत नहीं मिली। आप 1947 से चलते आए तो आपको कोई भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप देखते आए कि कौन कौन आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, अल्ताफ गौर, ठीक है ना, जो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, बाद में उसने अपना वो थर्ड वर्ल्ड मैगजीन निकाल के चाइनीज के साथ उसकी अच्छी बनी हुई थी, तो वहां से पैसे मुझसे बटोरता रहा। बाद में उसका बेटा जो है हमायूं ने शुरू कर दिया, फिर हमायूं ने इन द लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ के लिए लिख दी, राइट। तो फादर एंड सन, एक ने अयूब खान के लिए लिखी, एक ने मुशर्रफ के लिए लिखी। तो क्या नैरेटिव बनना है? हमारी इंटेलिजेंसिया जो है उसमें कैपेसिटी नहीं है। जब वो इंडियन चैनल पे जाते हैं, दे डोंट इवन नो, दे डोंट इवन प्रिपेयर व्हाट इज अ लाइकली डिस्कशन। एक बड़ा सिंपल होता है कि आपको जब इनवाइट किया जाता है, आप पूछ लेते हैं कि जी किस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। यू कांट, यू डोंट से स्पेसिफिकली मुझे क्वेश्चंस बता दे, but you generally get the subject. If you're going to talk about Kashmir, then you should be able to talk about Kashmir. You should have enough information. You should have enough notes made so you're prepared. Otherwise, you're going to go and get hammered. You'll be 1 against 3 or 1 against 5 or 1 against 6. वो इंडियन चैनल तो बिल्कुल ही पागलपन है। वहां तो 7-7 लोग, 8-8 लोग बैठे होते हैं एक वक्त में। And then if you're going to Arnab Goswami's program, you should know कि अर्नब गोस्वामी ने आपके साथ करना क्या है। वो आप तैयारी करके जाते हैं। अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, they will do what they always do with you, right? They will wrap you up and you won't know what to say. अच्छा एफएसजे, आपने बात की फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स की, जो अयूब खान की बायोग्राफी थी या ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने इंप्रेशन तो ये दिया कि ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखी है उन्होंने। और मजे की बात यह है कि उनकी प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा वाकया जो 1965 की वॉर थी, वो एक लफ्ज नहीं है उसमें इस वॉर के बारे में। Why did this glaring omission happen? Simple, Shakil Saab, because he had no control on the war. Those amongst us, you know, your age, my age, हमने जनाब 6 सितंबर को सुना, जनाब मेरे हम वतनों हमें लड़काया गया है, ये है वो है। But he was shitting bricks. That is the reality, right? Because he had been assured by Bhutto that India would never cross the international boundary. ठीक है ना, उसने कहा कश्मीर में सब कुछ होता रहेगा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर, बट नेशनल बाउंड्री इंडिया कभी क्रॉस नहीं करेगा। एंड इंडिया क्रॉस द नेशनल बाउंड्री। अयूब खान वाज लॉस्ट। वो क्या लिखता उसमें? और लिखा तो उसने नहीं, गोस्ट राइटिंग तो अल्ताफ गौर ने की। उसने सोचा कि यही बेहतर है, ठीक है ना, कि ये स्किप ही कर दो, ठीक है, इसका जिक्र करने की जरूरत ही कोई नहीं। सो दैट इज absurd, बट दैट इज रियलिटी। वो फील्ड मार्शल तो पहले से बना हुआ था, वो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल था, which meant no retirement. That is the only purpose of the field marshal rank, that there will be no retirement, because field marshals don't retire long, right? They can continue for as long as they want. But he had no control. He did not even have control over what was happening in Kashmir, right? So ये reality ये है, और इस वजह से उसका कोई जिक्र नहीं। अच्छा, आपने 1947 की भी बात की, तो क्या आप नहीं समझते कि आज तक हम ये वाजे नहीं कर सके कि मुल्क जो है उसका विजन क्या था, किस तरह का मुल्क बनना था? बहुत सारे लोग जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच का रेफरेंस देते हैं, और वो जो विजन है उस स्पीच का, वो क्लियरली एक सेकुलर स्टेट का विजन है। हमारे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान वाज मेंट टू बी अ प्योर इस्लामिक स्टेट। तो आज तक हम इस कंट्रोवर्सी को भी सेटल नहीं कर सके, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू बी। I think we can understand it in the context. थोड़ा सा 47 से पीछे जाना पड़ेगा। 37 में the Muslim League suffered heavy defeats.
in what they consider to be Muslim majority areas, especially in the Punjab. उसके बाद क्या हुआ, जिन्ना साहब ने सिकंदर हयात से एक पैक्ट कर दिया, जिन्ना सिकंदर पैक्ट के हिसाब से मशहूर है, एंड अलामा इकबाल वाज वेरी अपसेट अबाउट इट. उन्होंने कहा जनाब आप यूनियनिस्ट के हाथ में जाके खेल रहे हैं, ठीक है ना, दे विल consume the Muslim League. But Jinnah Sahab thought, that is salvation, and then Allama Iqbal also died at around the same time. So he couldn't influence it any further. But gradually, the unionist kind of formula of campaigning from the mosques started to take hold, right? And gradually they were consuming the Muslim League in Punjab. Because after 1939, after the war and what was happening, right? So there was a likelihood that India would get self-governance of some kind. And 42 onwards, there were more indications that it would be a partitioned India. It would not be an India which was intact. उसमें रूजवेल्ट का अपना एक रोल था, ठीक है ना, जो इंडियन एम्बेसडर था दिल्ली में, he had become more powerful. He was almost at par with the viceroy. फिर रूजवेल्ट ने अपना एक बंदा कर्नल जॉनसन वो भी प्लेस किया हुआ था दिल्ली में. So things were happening. उससे पहले अटलांटिक चार्टर भी हो चुका था, which required decolonization by the British after the war. ये सारा कुछ चल रहा था. Then we come to 1946, right, and the elections. उसमें the Unionists, now in the garb of Muslim League, really upped the ante in terms of the Muslim, let's say the Islamic narrative. और मस्जिदों से और different जलसों में बात होनी शुरू होगी कि जी पाकिस्तान जो है वो अगर आप पाकिस्तान को मुस्लिम लीग को वोट नहीं देते तो आप इस्लाम से खारिज हैं, ये सारा कुछ होना चाहिए. At the same time, if you see the Islamists, whether it was the Jamiat Ulama-e-Hind, whether it was the Jamiat Ulama-e-Here, whether it was the Jamaat Islami, तो मियाँ तुफैल, मौलाना मौदूदी, ये मुफ्ती महमूद और जो देवबंद के वहाँ के जो थे मुतज़म, इन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की. इन्होंने तो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ बात की, ठीक है ना. उसमें आपके खाकसार भी शामिल हैं, एहरार भी शामिल हैं, ठीक है ना. उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी जिन्ना जो है वो काफिर आज़म है, ठीक है ना. ये सारा कुछ हुआ. That is why Jinnah's speech on the 11th of August, right? Because now he wanted to distance himself. He never participated in the elections in the Punjab. No jalsa, no statement, no campaign. Ye fact. Most of his campaigning was in the Urdu-speaking or Muslim areas of India. ज़्यादातर वहाँ थी या कन्वेंशन थे. एक चीज हमें और समझने की जरूरत है. Muslim League was never really a political party. It was always a pressure group. उसकी कोई ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उसके कोई लार्ज स्केल वर्कर्स नहीं थे, उसकी कोई ज्यादा जो है वो एट द बेस लेवल सपोर्ट नहीं थी. And that is why after 47, immediately it was hijacked by those very same unionists, the same Momdors, the same Doltanas, the same Ivanas, the same Hayats, the same Manis. इन्होंने सब ने हाईजैक कर दिया. थोड़ा बहुत जो अगर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन थी तो वो बंगाल में थी, ठीक है ना. वहां पर मौलवी फजल हक भी थे, वो जो है अपने सोरवर्दी भी थे, ठीक है ना. दीज वर बिग लीडर्स जो वहां के लीडर्स थे. फजल हक जिसका हम कहते हैं कि उन्होंने और उन्होंने की थी, उन्होंने रेजोल्यूशन जो है 1940 की वो उन्होंने टेबल की थी 23rd of March को, एक्सेप्ट वो 24th को हुई थी. But the same Maulvi Fazl Haq as Chief Minister of Bengal was opposed to the idea of Pakistan. He was not in favor of the idea of Pakistan as Chief Minister of Bengal. तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हो क्या बैकग्राउंड में क्या था. तो हमारे बैकग्राउंड में जो है हमारे डीएनए में इशू है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ. Then we know that Jinnah was isolated right after I think 48, right, जो कश्मीर में लश्कर वश्कर गए उसके बाद तो उनको आइसोलेट कर दिया गया. He was placed in ज़ियारत, right, he was under isolation. तो ये रियलिटीज है हमारी, ठीक है ना. जो हम हिस्टोरिकल रियलिटी की बात नहीं करते, हम फैक्चुअल इसकी बात नहीं करते. There are many books which have these documented. के अजीज की भी किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और कुछ और भी टेक्स्ट. और मैंने जितनी पढ़ी हैं और मैंने काफी पढ़ी हैं
because I need I like to research. تو اس میں بھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ the Americans played a very major role in the creation of Pakistan. They were the ones who pressurized the British. Cripps mission بھی جو ہے انہی کا وہ جو ہے نا تیار کرتا تھا in a way. And Roosevelt was very disappointed when it failed because he also consulted Johnson. Colonel Johnson جو ڈیلی میں تھے کہ کیا وجہ تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ جی اس میں برٹش کا جو ہے نا وہ سنسیریٹی نہیں تھی. چرچل واز ناٹ really interested کہ وہ انڈیا کو جو ہے وہ سیلف گورننس یا اس کو انڈیپینڈنس دے, not just self governance. وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپ مان جائیں کوئی طریقے سے ڈومینین کے اندر رہ کے, right? That's why Cripps failed, because Gandhi absolutely refused, right? He wanted independence, and that's why we know that he started the Quit India movement in August, on the 8th of August 42. Cripps mission was March and April, right? So یہ background ہے, اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ ہماری کیوں اتنی جو ہے let's say inability ہے to create a national identity and to carve a national narrative. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 11 اگست والی جو سپیچ ہے that represented Jinnah's real vision for Pakistan? Jinnah was trying to put the genie back in the bottle. That is what the 11th of August speech was. That genie had been unleashed in 1946, right? And we're still dealing with the consequences of it. Jinnah Sahab tried on the 11th of August to put the genie back in the bottle. اس سلسلے میں سر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت مشہور ایک نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ نعرہ ایک سٹوڈنٹ تھا سیال کوٹ کا, اس کا نام تھا اصغر سودائی. سودائی آپ کو پتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے سودائی کا؟ سودائی مینز کریزی اور پاگل, تو یہ ان کا تخلص تھا. تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا, اور ملک غلام نبی جو بھٹو دور میں پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر تھے, انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. مسلم لیگ کے بڑے ایکٹیوسٹ تھے وہ, امرتسر سے تعلق تھا ان کا. ایک ہے داغوں کی بہار, اور دوسرا قصہ ایک صدی کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناح صاحب نے 47 میں, دسمبر 47 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس ہوا خالق دینا ہال کراچی میں. وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے, بڑے ریلیجس مائنڈڈ کوئی تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پاکستان بن گیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کے چال ڈھال وہی ہے جو انگریز دور میں ہوتی تھی, اور اسلام نافذ نہیں ہوا. تو جناح صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے ہو سکتا ہے چند ووٹ لینے کے لیے یہ نعرہ لگایا ہو, میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا, میری ورکنگ کمیٹی نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا. تو اس کے باوجود یہ نعرہ آج ہر جگہ آپ کو سنائی دیتا ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی کئی دفعہ یہ جلسہ اپنے جلسوں میں یہ نعرہ لگایا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کنٹروورسی کو؟ دیکھیں جو آپ نے فیکٹس بیان کیے وہ اسی طرح ہے. اسی طرح یہ نعرہ جو ہے نہ جناح صاحب نے لگایا تھا, نہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے لگایا تھا, نہیں لگایا تھا. بٹ دس ہیز بیکم اے پاپولر, جسے کہتے ہیں نا وہ غلط العام جو ہے, وہ غلط العام کی اصطلاح میں آ جاتا ہے کہ ہر بندے نے بلیو کرنا شروع کر دیا, انکلوڈنگ چیئرمین پی ٹی آئی, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. بیکاز وہ یہ بھی بات بیسکلی یو ٹرائی ٹو فائنڈ اے بائنڈنگ فورس, ٹھیک ہے نا, بیکاز یہ جو آپ کا فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ یکسانیت نہیں ہے. کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں, لینگویج کا تو ڈفرینس ہے ہی ہے, تو ٹریڈیشنز کا بھی ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے نا. The KP is very different from Sindh. So you needed some kind of a binding force. And that binding force happened to be faith in the absence of anything else. یا تو ہے نا کہ آپ ایک نیشن فورج کرتے شروع سے. وہ میں نے جیسے کہا کہ مسلم لیگ واز نیور اے پولیٹیکل پارٹی, رائٹ, اٹ واز مور آف اے پریشر گروپ. اس کو ہائی جیک کر دیا گیا, اور وہ صحیح ہے, وہ خلق دینا ہال میں جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ دیکھیں نا منسٹر تو اسی طرح چل رہے, وہ چل رہے تھے, وہ تو ہمیشہ سے ہی چل رہے تھے, وہ وہی تھے جو برٹش گورنمنٹ میں بھی منسٹرز تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو اسی طرح چل رہا. یہ بائنڈنگ فورس جو ہے, اس کو جو ہے یہ نعرہ جو ہے اور یہ بلیف جو ہے, دس بیکیم اے بائنڈنگ فورس.
in a way to keep everything together. We could have done better. उसमें मैं तो believe करता हूँ we could have done better, right? And we should have done better. क्योंकि as something that creates a commonality, तो ठीक है. But इसके consequences जो है, वो थोड़े से जो है ना, we need to study that first. We need to debate that of what causality is there in this belief. अच्छा सर, इमरान खान साहब ने नारा लगाया रियासत मदीना का, उस पे आपके दौर में FBI के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि भाई रियासत मदीना बहुत मुख्तलिफ वक्त था, बहुत मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स थी और आज के दौर में उस तरह की बात नहीं चल सकती. तो रिलीजन का स्लोगन लगाना क्यों जरूरी समझा खान साहब ने? अच्छा, ये देखिए, because I know him for almost 42 years, 43 years, and I've had a discussion with him. Riyasat Medina is a conceptual thing. We are not talking about, how governance was done then and how governance can be done now, what conditions there are, what kind of technology application. There are, all these things. Basically, what was the Riyasat Medina? It was a concept of a welfare state where the weak were to be protected, where justice was to be meted out equally, where equality was the critical element of the Medina city state. Right? It is if you study the Meesaq-i-Medina, which most people don't, it has 47 clauses in it. It is a constitution, and it is a constitution which envisioned devolution also. So clans and sub-clans were free to continue to do things the way they had always done and the way they thought they should do. There were two things which were centralized. One was security and one was defense. All the other kind of clauses, and there were 47 of them, right? Usme, the principle was fundamental rights of people. That is the Riyasat Medina, not laws, that is not what Riyasat Medina was. Right? It's very, very simple. It was the concept of a welfare state. And the key to welfare is always going to be a set of laws and justice and equality and meritocracy. When you have equality and justice, you will have meritocracy, right? That is why he explains it at times, right, in terms of, what it meant. How people who had a very tribal existence before that, who had a very limited view on life, right, under the Prophet, peace be upon him, right, rose as a nation in a very short period of time. If you look at Hijrat, the date, and you look at the conquest of Mecca, it's only 10 years, right? And after that, the continuation in terms of, what happened in the next 30 years. The two superpowers were dismantled, were pushed back, right, from the Arabian Peninsula, from the Levant, from the edge of the Mediterranean, right? That happened. And he talks about it in that context. It was this awakening. It was this sense of justice that actually created this whole force, right, that people, right, could come together and they could do that. Governance is another question. What was the governance like, right? How was trade done? What was the economy like? Right, so ये उसमें एक दो elements हैं, the concept of zakat, the concept of क्या कहते हैं उसको, किस का जो होता था for non-Muslims, right, for their protection, ये सारी चीजें, there was a structure, उसकी वो बात करते हैं. That's what he talks about. He doesn't talk about hudud laws. That's a different area. जो हमारे unfortunately liberals हैं, who do not have, who never studied. They've never studied, I can tell you that. I've read a lot of texts, and not of just Muslim scholars, of international scholars. Right? I came across a book recently, Hazel Treaty, which is, he writes about the rise of the Islamic State. How does he talk about the rise of the Islamic State? He's talking in the modern context.
that whatever was envisioned then can apply today also. It's a different scale that you'll apply it at. When we talk about justice, then justice is justice, right? You will have to clean up your lower courts in terms of your trial courts, and you will have to give equality in terms of adjudication. ये है रियासत मदीना, not chopping of hands and stoning of people. FSJ ये बताइएगा कि मिसाक मदीना क्या वजह है कि मॉडर्न जो लोग हैं यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के पढ़े हुए वो तो मिसाक मदीना की बात करते हैं, हमारे उलमा जो हैं वो मिसाक मदीना की इतनी बात नहीं करते, और उसमें तो यहूदियों को और मुसलमानों को एक उम्मत करार दिया गया था। हम तो अब टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कि मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दे बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस, और मिसाक मदीना में एक उम्मत करार दिया गया यहूदियों को और मुसलमानों को। और सर फिर ये भी बात आती है कि मिसाक मदीना बहुत अरसे तक लागू नहीं रहा, यहूदियों को मदीना से एक्सपेल कर दिया गया, और बहुत सारे हिस्टोरियन आपको ये बताएंगे कि बनु कुरैजा के मर्दों को बिहेड कर दिया गया 500-600 के करीब। और डॉक्टर असरार जैसे जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि ये जो उस वक्त की जो जंगें थी, जंगे बदर खास तौर पर, ये इकदामी जिहाद की मिसाल थी। इकदामी जिहाद को आप कह सकते हैं प्री एम्प्टिव जिहाद या इवन अग्रेसिव जिहाद। यानी वो कहते हैं कि हमारे मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं वो अपोलोजेटिक हो गए हैं और वो इनको दिफाई जंगें करार देते हैं, जबकि ये दिफाई जंगें नहीं थी, ये इकदामी जिहाद की एग्जाम्पल थी। तो दूसरा मसला इसमें आता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप का। हमारे कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, हमारे उलमा में खास तौर पे, वो ये नहीं मानते कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के राइट्स बराबर हैं। मौलाना मौदूदी को ले लें, डॉक्टर असरार को ले लें, वो सब ये कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन होते हैं, अगर थर्ड क्लास सिटीजन नहीं भी होते तो इन मसाइल को कैसे हल करेंगे? जब आप रिलीजन का एक स्लोगन लगाते हैं तो देन स्टेट बिकम्स एन अरीना ऑफ थियोलॉजिकल डिबेट्स। देखें, अरीना ऑफ थियोलॉजिकल डिबेट क्यों है? बिकॉज ऑल दी स्कॉलर्स दे वांटेड देयर ओन सुप्रीमेसी। ये अपनी सुप्रीमेसी की बात करते हैं, किसी और की सुप्रीमेसी की बात नहीं करते, ठीक है ना? ये सिलेक्टिव जो है ना एप्लीकेशन करते हैं। देखिए, मिसाक मदीना में जैसे मैंने कहा कि देयर वर 47 क्लॉजेस, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स, बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। उसमें पेगन्स भी थे, मुस्लिम्स भी आए, उसमें क्रिश्चियंस भी थे और उसमें जूस भी थे। Two of the Jewish tribes, right, were large tribes. They signed this Meesaq, right? They agreed that they would be part of collective security and collective defense. They violated their agreement. Jang-e Khandak mein, they violated their agreement. They almost, right, gave the Quraysh victory through that violation by stepping back at a certain place along the ditch itself, right? And the consequence of that was this punishment that was already agreed, और traditional tribal culture में भी ये था। कोई उनकी opposition नहीं हुई। The Jews did not take up arms, कि हमारे सर नहीं आप उतार सकते। Agreement था। ये था कि our women and our children will not be slaves. That was the acceptance. ठीक है, ये था। बाकी जो tribes थी मदीना में, who were part of the whole Meesaq, they were party to that agreement. They were not, it was not one person deciding कि ये कर दे, इनके सर उड़ा रहे हैं, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे नहीं था, ठीक है ना? We must understand that. जितना मैंने लिबरल्स के बारे में कहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे उलमा भी जो है ना वो बिल्कुल सिलेक्टिव। बदर was not a defensive move, Badr was an aggressive move. We must remember that the Quraysh and even the tribes of the Hijaz, they had two kind of pursuits. One was trade and the other was raid. So raid was a legitimate weapon at that time. And the wells of Badr were strategic importance because the caravans that used to travel from Mecca to right up to Ethiopia, they had to water at Badr. It was one of those critical junctions in the desert. The Prophet
did make an aggressive move because he wanted to test and he wanted to challenge. So the Muslims occupied the wells of Badr, and Abu Sufyan had no choice except to call for reinforcements from Mecca and try to dislodge them so he could have access to the wells. That didn't happen. Right? So the next two, Uhud and ditch, Khandak, those were defensive, right? And there also, his statesmanship, his generalship, right? Uhud, we know what happened. Uhud, we know because instructions were not followed at one stage by the archers, which gave Khalid bin Walid and Akrama opportunity to attack from behind. Before that, the Quraysh had almost taken flight. They had been defeated in the open battle. Can I give you a fact? Khandak was a defensive battle, right? And by then, right, a lot of tribes had joined the Quraysh in trying to crush the movement in Medina, the Muslim movement or Muslim जो evangelism हो रही थी वो सारा कुछ हो रहा. But we also know that he entered Mecca with 10,000 and not a drop of blood was shed, right? So that also has to be put in context. उसके बाद जो कहते हैं कि वो रियासत मदीना didn't last for long because the Banu Umayyah created a dynasty. They created kingship. The concept of the Khalifa, right, suddenly became the concept of an absolute ruler. And he did not need to be chosen. It became lineage, right, dynastic. And every evil lies at the foot of dynasties, right? We know that too from history, all kinds of dynasties, right? We know what happens. अच्छा, एफएसजे ये बताइएगा कि जंग खंदक में यहूदियों ने क्या खिलाफ वर्जी की? डिड दे स्टैब द मुस्लिम्स इन द बैक? और Yes. क्या सजा क्या दी गई उनको यहूदियों को? वर जी. जूइश मैन बिहेडेड और उनकी औरतों और बच्चों को जो है वो कैदी नहीं बनाया गया था, गुलाम नहीं बनाया गया? क्या उनको बेचा गया था या मुसलमानों ने अपने आपस में तकसीम कर लिया? क्या हुआ क्या था? अच्छा, इसमें हुआ ये था कि they did give the Quraysh passage across the ditch in an area that they were supposed to be defending. So that was a stab in the back. That was a very serious issue. That was a very serious betrayal. उसके बाद the Qurayza, because they were responsible for that small patch that they were supposed to defend, इसलिए उनको punishment दी गई थी. From my understanding, yes, 500 of their men, right, suffered the punishment of beheading for that betrayal. The women and children, my own reading of text is that they were not enslaved, right? What was normal then was polygamy was already there. So responsibility was taken for those women. They were absorbed within the other tribes. Now you can give it any connotation you like, right? And different people give it different connotations. But that is what really happened. उस वक्त जो है tradition यही थी that if you won in battle, so the women and children would be enslaved. And enslaved means that they would have no rights, that they could be sold, they could be treated any which way the victor wanted. Right? हमें पता है कि जी और भी इस किस्म के instances थे. Especially, during the जो वो थी क्या उसको कहते हैं गदा वॉर्स या हजरत अबू बकर के वक्त में जब apostasy reared its head and he decided to quell it because that was a very critical time, and Khalid bin Walid was one of those commanders, right, who was entrusted with the task. And there is an incident of him, right, killing one of the tribal chiefs and marrying the wife. So he was actually censured for that he killed the tribal chief even when he was willing to surrender. क्योंकि असल चीज क्या थी? Either come back to Islam or face death. These are the two options. Either you renounce your apostasy and you come back in the fold of Islam, or you take a bomb. अच्छा, आपने कहा कि उस वक्त जो थे कारवान जो थे ट्रेड कारवान को रेड करना लेजिटिमेट समझा जाता था,
تو کیا مسلمانوں کے کسی قافلے پہ بھی نان مسلمز نے اٹیک کیا اسی طرح سے؟ The Medina were not traders. The Medina inhabitants were farmers. It was an oasis. Okay. Because it was an oasis, they had date palms, and they were basically farmers. So they were not raiders. The Quraysh were raiders. So the Prophet, the Muslims that came with him from Mecca, right? For them, raid was a legitimate thing. Even before Badr, small raids had been carried out on tribes around Medina. Abu Sulaim is one of those tribes جس پہ ایک چھوٹا سا ریڈ کیا گیا تھا. اور ریڈ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ جو ہے ایک تو اپنی پاور کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے تھے, دوسرا آپ جو ہے اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی آپ کے ہاتھ میں کچھ مال غنیمت آئے گا, رائٹ. سو ریڈ اینڈ ٹریڈ, دیز آر دی ٹو تھنگس. اور اس میں ود ان دی ٹریڈیشن اٹ واز آل لیجیٹمیٹ. We must not forget that we are talking about the earliest period of Islam, right? So we are going from a very tribal mindset to a different mindset. That is why Medina is so important, because Medina is where these new concepts were being tested, they were being introduced. اور وہاں پر جو ہے ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ کیسے, how do we break from that tradition جسے جاہلیہ بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جاہلیہ سے بریک جو تھا وہ مدینہ میں ہو رہا تھا, وہ میثاق کے تھرو ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہاں وہ ہو رہا تھا. اب we can look at an alternative and say if the Banu Qurayza had not done what they did, اگر وہ جنگ خندق میں جو ان کا معاہدہ تھا اسی معاہدے پہ رہتے تو کیا تب بھی ان کے ساتھ یہ ہوتا؟ موسٹ لائکلی نہیں ہوتا, کیونکہ دوسروں کے ساتھ تو نہیں ہوا. مکہ جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی ان کے ساتھ تو نہیں ہوا. لیکن سر بہت سارے اسکالرز ایسے بھی ہیں جو بنو قریظہ والے واقعے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور اتنے یہودیوں کو نہیں مارا گیا, اور جنگ بدر بھی ڈیفینسو تھی اور باقی بھی جنگیں جو تھی وہ ڈیفینسو تھی, کیونکہ اسلام جو ہے نا, جی اسلام جو ہے نا ان کے بقول اسلام جو ہے وہ ڈیفینسو وار پہ یقین رکھتا ہے, اوفینسو اور اگریسو وار پہ یقین نہیں رکھتا. نہیں, ڈیفینسو کا کیا مطلب ہے؟ At times an offense is the best defense. Preemption is a defense. یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرے نمبرز کم ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے جو ہے حکمت عملی جو ہے جنگی حکمت عملی مجھے اپنانی پڑے گی, تو میں کیا ویٹ کرتا رہوں گا کہ آپ آئیں مجھ پہ حملہ کریں تو اس کے بعد میں آپ کا جواب دوں گا؟ ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. Even an offensive move is within the realm of defending myself. You are defending a concept. آپ ایک کانسیپٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ کو اگریسو موو کرنی تھی تو اگریسو موو کر رہی تھی. میں ان اسکالر کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے, یہ اپنی مرضی سے چیزیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے عباسیوں کے وقت میں بھی بڑی بڑی چیزیں کہیں, بڑی بڑی باتیں کی, بڑے بڑے جو ہے نا اپنی طرف سے شگوفے انہوں نے چھوڑے, اور انہوں نے 300-350 سال جو ہے ایک بادشاہ چلنے, ٹھیک ہے نا. میں ان کو کیوں مانوں؟ یہ کون سے کہاں کے اسکالر؟ بہرحال ان میں شبلی نعمانی جیسے اسکالرز بھی شامل ہیں. تو سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2021 میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے انڈیا کے ساتھ ایک ریپروشما نیگوشیٹ کیا اور خان صاحب کی اجازت سے کیا, کہ جس میں یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو نارملائز کیا جائے, اور پرائم منسٹر مودی آئیں گے اور ٹریڈ اور کامرس اور سپورٹس کی بحالی کا اعلان کریں گے, اور کشمیر کے ایشو کو 20 ایئرز کے لیے فریز کر دیا جائے. تو کہا یہ جا رہا ہے, حامد میر نے یہ لکھا کہ شاہ محمود قریشی پریویلڈ آن پرائم منسٹر عمران خان, کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہمیں ٹریٹر کہا جائے گا اور ہمیں الیکشن میں بہت نقصان ہوگا. تو what is your take on this? ایک تو my take is on Hamid Mir. That Hamid Mir barely ever really speaks the truth. وہ جو مرضی چاہتا ہے سٹوری بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بس اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے اس صاحب نے مرنے سے پہلے میری کان میں کہہ دیا, اس کے خاندان کو نہیں پتا ہوتا, حامد میر کو پتا ہوتا کہ اس نے مرنے سے پہلے کیا کہہ دیا. دیکھیں, we know now that Bajwa was undermining
Imran Khan's government since 2018, late 2018. ठीक है ना, उसने अंडरमाइन करना शुरू किया हुआ था. The departure of नवाज शरीफ, अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया ना कि जी उसको एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था यहाँ से. उन्होंने कहा जी वो उसने मोहम्मद मालिक ने थोड़ी सी कोशिश की उसको स्पेस देने के लिए कि इस पतली गली से निकल जा, वो जाहिल आदमी है. उसने कहा, उसने पूछा कि बट कोर्ट्स ने उसको, उसने कहा कोर्ट्स भी तो मैनेज किए थे एस्टैब्लिशमेंट. ये रियलिटी है. 2021 तो बहुत बाद की बात है. 2019 में इंडिया ने स्टेटस चेंज किया कश्मीर का अगस्त 5 को, ठीक है. उसके बाद इमरान खान वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड कि जब तक ये रिवर्स नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, कोई रिप्रोचमेंट नहीं होगी, कोई जो है वो कूलिंग डाउन नहीं. उससे पहले अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने कहा था बिफोर द इंडियन इलेक्शन that BJP is more likely to negotiate a settlement of Kashmir than Congress is. Why was he saying that? Because BJP, being a Hindutva party, would have easier sailing, even in India, if they were to try and solve the Kashmir problem. ठीक है. अब 2021 में जब आते हैं तो all this game was being played by Bajwa and Faisal. Bajwa, don't you forget that when Bajwa was in the peacekeeping force in Africa, his supervisor, his commander was an Indian. ये भी फैक्ट है जो बहुत से लोग बिल्कुल ही जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, साइड पे बात ही नहीं करते. So we don't know what agenda Bajwa was really following. Like, what did he mean by freezing the Kashmir issue for 20 years? There is no such thing as freezing an issue. Right? You have to sit down, you have to talk, you have to resolve it, whichever way. Musharraf ने भी claim किया था he was very close to a resolution of the Kashmir issue, which is most likely going to be governance in both Kashmir occupied as well as Azad Kashmir. We call AJK Azad Kashmir, they call AJK occupied Kashmir. ये सारी reality है. मुशर्रफ ने भी claim किया था और उसने कहा उसको बाद में sabotage कर दिया. उनकी जो आई थिंक सुषमा स्वराज थी, ये क्या नाम था उनका, तो उन्होंने सेबोटाज कर दिया. ये रियलिटी है. शाम में वो फाउंड आउट कि ये हो रहा है. उस वक्त उसने फिर खान साहब के पास जाके उसने कहा कि जनाब ये हो रहा है एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी ऑफ दिस एंड वेरी केयरफुल ऑफ दिस. दे विल हैंग दिस अराउंड आवर नेक्स्ट. क्योंकि उनको पता था, उस वक्त पता चल चुका था कि बाजवा क्या कर. अच्छा, क्या जनरल बाजवा ने कोई रोल अदा नहीं किया नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने में और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में? बिल्कुल नहीं. 2016 में पनामा का केस आया, ना वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ, ना उसका पाकिस्तान में कोई अमल दखल था. ठीक है ना. वो हमें पता है कि जी वो पनामा लीक्स कैसे हुई. एक जर्मन न्यूज़पेपर ने वो किया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जर्नलिस्ट की, उसमें एक उमर चीमा साहब पाकिस्तान से भी थे जिन्होंने वो एक दफा ब्रेक तो कर दी क्योंकि उसके बाद चॉइस नहीं थी. मैंने उमर चीमा को 10 दफा सवाल पूछा, ये बताओ कि नेल्सन वो नेस्कोल और नीलसन की बेनिफिशियरी कौन थी, वो जवाब नहीं देता. ठीक है ना. ये एक तो ये पार्ट. उसके बाद क्या हुआ आपको याद है, यही ख्वाजा आसिफ भांड सियालकोट का जो खड़ा होकर कहता है नेशनल जी भूल जान के, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज, मियां साहब कोई फिक्र ना करो, ये भूल जाएंगे बहुत जल्दी. भूलने नहीं दिया गया. The matter went to court, right, in November 2016, right. Agitation हुई उससे पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो केस टेकअप किया. 2 साल वो केस चला, 2 साल. उसमें इंटरवेंशन नहीं की बाजवा ने, क्योंकि उसमें मूड जो है आर्मी में डिफरेंट था. आर्मी में उसमें मूड ये था कि वी नीड टू हैव अकाउंटेबिलिटी. Bajwa was playing his own game, which we saw later कि वो game थी क्या. He was never interested in accountability because he himself never wanted to be held accountable. 12 अरब 70 करोड़ की कहानी तो हम सब सुन चुके हैं. ठीक है ना. इतना अरसा तो नहीं होगा वो भूल गए हो. So he had never had anything to do with the ouster of Nawaz Sharif. Right? Justices Khosa and Gulzar, in the first instance, had declared him ineligible to hold office. बाकी जो 3 जजेस थे
انہوں نے کہا کہ نو وی وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ فردر. جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی نے کام کیا. جے آئی ٹی میں سویلینز بھی تھے, ٹھیک ہے نا, واجد ضیاء تو سویلین تھا. دو اس میں جو ہے وہ ایک آئی ایس آئی کا اور ایک ایم آئی کا بھی شامل تھا. بٹ وہ پراپر انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس کے ابھی بھی ڈاکیومنٹ 10 کا ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکیومنٹ 10 کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں وہ جو ڈبہ ہے اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہمیں نہیں پتا. دیکھو اس میں بہت سی چیز جو تھی وہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز تھے, جو انفارمیشن لی گئی تھی یو اے ای سے لی گئی تھی, دوسری جگہوں سے لی گئی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ تھا, یہ تو ہو گیا پاک نواز شریف کا ایشو. اب آ جاتے ہیں کہ جی عمران خان کو اقتدار میں لائے گا. مجھے اگر آپ پوچھیں, and I can cite some evidence to that also. If anything, Imran Khan was prevented from getting a simple majority. 133 سیٹوں سے سمپل میجورٹی آتی ہے. عمران خان کو 116 سیٹیں ملی. وہ 17 سیٹیں جو چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اگر آپ ریکارڈ چیک کریں نا 2018 کے, اگر آپ ریزلٹس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک پیٹرن کہ جو کلوز فاٹ کانسٹیٹوئنسیز تھیں اس میں کیا ہوا. ایک لے لیتے ہیں عثمان ڈار کی کانسٹیٹوئنسی کو, لے لیتے ہیں سیالکوٹ میں, وہ جیت رہا تھا. یہ بھی ایویڈنس ہے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جی اس نے خواجہ آصف نے باجوہ کو میسج بھیجا, فون